हेलो फ्रेंड्स मो श्रेया स्वागत जनाऊँगी आम चैनल द क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आशा करुच्ची तुमने समस्ते बहुत भलरे थी निजर एग्जाम पाई बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर तो सांग मैंने आज आम मैंने डिस्कशन करवा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जो थी कि आम मैंने विभिन्न क्वेश्चन उपरे नजर देवा। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ओके तो यहाँ गोटे एमतीका टॉपिक जोटा कि एव्री एग्जाम रे आम भारतर जिते सब एग्जाम हो सबुथ आसवा अनिवार्य। ठीक अच्छे तेरे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रू जहाँ किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही से सब को आम मैंने डिस्कशन करवा। ओके तेरे चल क्लास टी को स्टार्ट करवा आ डेरी न करिकी देखिनियो। फर्स्ट रही हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया चैप्टर 1 रे आम मैंने डिस्कशन करवा सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। ओके तो से देखा आम मैंने जे ये जो क्वेश्चन गुड़ाक रही गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन गुड़ाक निहाती भाव में नजर दब तुम एसएसबी पीजीटी हो टीजीटी हो ओटेट हो सीटेट हो एव्री एग्जाम कि ओपीएससी पीजीटी हो कि ओपीएससी हो। ठीक अच्छे ओएस ओपीएससी ओएस कथा कहूँ सबू किसी ये टॉपिक पूरा इंपोर्टेंट रही। ठीक अच्छे तेरे चलो देखा फर्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही व्हिच आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट इन इंडिया। तो वेद होची सबुठारु पुरातन टेक्स्ट आम भारतर। हाउ मेनी हाइम्स और सूक्तस आर इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद रे समुदाय 1028 हाइम रही। इन व्हिच वेद इज द गायत्री मंत्र फाउंड। गायत्री मंत्र को वेद रे रही ना ऋग्वेद रे रही तार तृतीय मंडल रे गायत्री मंत्र रही। व्हिच वेद इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक आसी कौथिरो ना सामवेदरु। व्हिच वेद डिस्क्राइब्स द रिचुअल्स फॉर सैक्रिफाइसेस एंड यज्ञ एवं सैक्रिफाइस पाइंकी बा जो बलि प्रथा तथा बलि एवं यज्ञ एसबू केमथरे लिखा जाइछि ना यजुर्वेद रे लिखा जाइछि। व्हिच वेद एक्सप्लेन्स चार्म्स स्पेल्स एंड मैजिक ना अथर्व वेद रे एसबू रहिछि। व्हाट आर द उपनिषद्स आल्सो नोन एज। उपनिषद को वेदांत मध्य कुहा जाय थाए। ओके फ्रॉम व्हिच उपनिषद इज द फ्रेज सत्यमेव जयते टेकन। सत्यमेव जयते आसीछि कोथिरु ना मुंडक उपनिषद रु आसीछि। हाउ मेनी पुराणास आर देयर इन टोटल। समुदाय 18टी पुराण अछि। हु रोट द महाभारत इन संस्कृत। संस्कृत रे महाभारत किए लिखिछंती ना वेद व्यास लिखिछंती। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका। इंडिका किए लिखिछंती ना मेगास्थेनिस लिखिछंती। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रैवेलर फाहेन विजिट इंडिया। चंद्रगुप्त टू बा विक्रमादित्य समय रे फाहेन भारत को भ्रमण रे आसीथिले। देन नेक्स्ट कौन रही देखा व्हिच किंग्स कोर्ट डिड वेनसांग विजिट। हर्षवर्धन एच आउ एच 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 करके मन रखिदेव वेन हर्ष तो ठीक अच्छे तो हर्षवर्धन का समय रे बा हर्षवर्धन को कोर्ट को आसीथिले वेनसांग। देन रही व्हिच फॉरेन टेक्स्ट इज ए प्राइमरी सोर्स फॉर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सेटा होची इंडिका। What is the famous book written by Alberuni? Alberuni लिखिछंती किताब उल हिंद। Okay, which book was written by the Moroccan traveler Ibn Battuta? Ibn Battuta लिखिले रीला। Okay, what is the study of inscriptions called ना epigraphy? ओके इंस्क्रिप्शन रो स्टडी को एपिग्राफी बोली कहा जाय थाए। हु वाज द फर्स्ट किंग टू इश्यू इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। इंडिया रे इंस्क्रिप्शन प्रथमे अशोक प्रचलन करथिले। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेसिफर अशोकास इंस्क्रिप्शन इन 1837। 1837 रे जेम्स प्रिंसेप अशोकंकर इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करथिले। इन व्हिच लैंग्वेज वर द मोस्ट अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिटन ना ब्राह्मी प्राकृत स्क्रिप्ट रे किना लेखा अछि। Which inscriptions describes the victories of समुद्रगुप्त। अलाहाबाद प्रशस्ति बा प्रयाग प्रशस्ति रे लिखा अछि समुद्रगुप्तंकर विक्ट्री। हु कंपोज द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन तो जोथरे समुद्रगुप्तंक विषय रे लिखा हला तांकर जे कोर्ट पोएट थिले कहार ना समुद्रगुप्तंकर से हेले हरिसेन। तो हरिसेन ए अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कौन करछंती ना कंपोज करछंती। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स हला न्यूमिस्मेटिक्स। ओके कॉइन रो स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स बोली कहा जाय थाए। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन हेला एपिग्राफी ए दुटा मन रखिबो। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। भारत रे प्रथम करिकी को राजा माने गोल्ड कॉइन प्रचलन करथिले ना इंडो ग्रीक माने। व्हिच डायनास्टी इश्यूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। प्रथमे तो इंडो ग्रीक माने बा इंडो ग्रीक राजा माने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस कले किंतु
गुप्त माने बा गुप्त राजा माने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इश्यू करथिले ओके हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी रो फाउंडर तथा फादर किए ना अलेक्जेंडर कनिंगहाम ओके व्हेन डिड द एक्सकवेशंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगिन ना 1921 मसीह रे इंडस वैली सिविलाइजेशन रो एक्सकवेशन हेतिला हु डिस्कवर्ड हरप्पा को डिस्कवर करथिले दयाराम साहनी इटी धरम साहनी ही जाइछि ना दयाराम साहनी ओके हु डिस्कवर्ड मोहेंजोदारो ना आरडी बनर्जी डिस्कवर करथिले मोहेंजोदारो को हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र लिखिछंती कौटिल्य हु रोट राजतरंगिणी और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से लिखिछंती किए ना कल्हान हु रोट हर्षचरित लिखिले बाणभट्ट हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले मुद्राक्षसा बा मुद्रा राक्षस से हेले विशाखा दत्ता हु रोट बुद्धचरित लिखिले किए ना अश्वघोष हर्षचरित लिखिले बाणभट्ट किंतु बुद्धचरित लिखिले अश्वघोष ओके Which king is described in the हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रे खारवेलଙ୍କ संपर्क रे describe करा जायछि Who issued the नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी बालश्री नासिक इंस्क्रिप्शन इश्यू करिसंती Who issued the जूनागढ़ संस्कृत इंस्क्रिप्शन ना रुद्रदमन जोटा को कि गिरनार इंस्क्रिप्शन मध्य कहा जाय थाए Who is known as the नेपोलियन ऑफ इंडिया ना समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कहा जाय थाए Who focused विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल Who founded विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ना धर्मपाल Who founded नालंदा यूनिवर्सिटी ना कुमारगुप्त तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किए फाउंड कले ना धर्मपाल और नालंदा यूनिवर्सिटी कले कुमारगुप्त मन रखिबा ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर इज हरप्पा लोकेटेड हरप्पा को नदी कूल थिला ना रवि नदी कूल व्हाट डज द वर्ड मोहेंजोदारो मीन्स माउंड ऑफ डेड इन व्हिच स्टेट इज द लोथल पोर्ट लोकेटेड लोथल अछि गुजरात रे व्हिच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड बाय द इंडस पीपल ना पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ओके व्हाट वाज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन मोहेंजोदारो द ग्रेट बाथ होचे सबुठारु बड़ तथा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन मोहेंजोदारो व्हिच मेटल was unknown to the Indus people आयरन रो व्यवहार से माने जानि नथिले इन व्हिच इंडस सिटी वेयर रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस फाउंड सेटा हला सुरकोटडा तो सुरकोटडा रे हमर जो कोन रहिछि ना हॉर्सेस रो रिमेन्स देखिबा को मिलिछि व्हाट डज द नेम कालेबंगन मीन कालेबंगन जोटा कि रहिछि राजस्थान रे तार मीनिंग होछि ब्लैक बैंगल्स ओके व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया ना सबुठारु बड़ इंडस वैली साइट होछि ना राखीगड़ी व्हाट आर द वेदस also called since they are heard जेहेतु वेद को सुनी की मन रखा जाउथला तेनु ताको श्रुति बोली मध्य कुआ जाय थाए आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ व्हिच वेद ना ऋग्वेद रो गोटे उपवेद हेउची आयुर्वेद व्हाट डज गंधर्व वेद डील विथ गंधर्व वेद रे म्यूजिक रहिची उपवेद ऑफ सामवेद म्यूजिक सहित जड़ित गंधर्व वेद मध्य से सामवेद रो गोटे उपवेद जहा की म्यूजिक संपर्क रे सूचना देई थाए हु रोट अष्टाध्यायी द बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर होची अष्टाध्यायी जहा को लिखिछंती पाणिनि हु रोट द रामायण इन संस्कृत रे रामायण लिखिछंती वाल्मीकि रामायण को जय संहिता कुआ जाय न था एठी जय संहिता हैला कोटा ना महाभारत ओके शिल्पवेद इज द उपवेद ऑफ व्हिच वेद ना अथर्व वेद रो उपवेद होउची शिल्पवेद व्हिच पुराण मेंशन्स द सप्तगिरी और 7 हिल्स मत्स्य पुराण रे लेखा छे सप्तगिरी बा 7 हिल्स विषय रे व्हाट आर द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड बुद्धिज्म रो पवित्र धर्मग्रंथ होची कोटा ना त्रिपिटक व्हिच स्टोरीज डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्ध जातक टेल्स ओके Where is the world's largest Buddhist स्तूप लोकेटेड कोठारे रहिछि ना बोर्बोदर इंडोनेशिया रे रहिछि वर्ल्ड रो सबुठारु बड़ बुद्धिस्ट स्तूप बिटवीन whom is the discussion in मिलिंद पन्हा किंग मिलिंद एवं नागसेनक मध्य रे होइथिबा कथोपकथन को मिलिंद पन्हा रे लेखा जायछि ओके हु रोट द जॉइंट टेक्स्ट कल्पसूत्र लिखिछंती भद्रबाहु व्हिच वाज द फर्स्ट एवर संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन इंडिया ना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ओके नेक्स्ट कौन रही देखा ना व्हिच इंस्क्रिप्शन मेंशन्स अशोका आज देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मास्की इंस्क्रिप्शन रे अशोक को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भाव में उल्लेख करा जायछि व्हिच अशोकान इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द कलिंग वार रही
13th rock edict रे. Okay, where is the Eragudi inscription of Ashoka located? ना आंध्र प्रदेश रे रही एरागुडी inscription. Who issued the Aihole inscription? Aihole inscription inscribed by issued by Pulakeshin II, जोटा कि रवि कीर्ति लिखिछन्ति. What does the उत्तर मेरुरु inscription describe? ना चोलो village administration विषय रे कि ना उत्तर मेरुरु inscription रे लिखा जायछि. महाभाष्य के लिखिछन्ति ना पतंजलि लिखिछन्ति. अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास लिखिछन्ति. नीतिशास्त्र लिखिछन्ति कमंडक. मृच्छकटिका लिखिछन्ति शूद्रक. पंचतंत्र लिखिले विष्णु शर्मा. बृहत कथा इन पैशाची लैंग्वेज लिखिछन्ति किए ना गुणाढ़. हु रोट गाथा सप्तशती. गाथा सप्तशती लिखिले हल. चरक संहिता मेडिसिन सहित रिलेट करिथाए. सुश्रुत संहिता सर्जरी सहित रिलेट करिथाए. हु इज नोन एज द इंडियन आइंस्टाइन. इंडियन आइंस्टाइन हेले नागार्जुन. व्हाट इज एडी और एनो डोमिनी नाउ रिफर टू एज सीई और कॉमन एरा. When did the विक्रम एरा बिगिन. विक्रम एरा आरंभ होइथिला 57 BC रे एवं साका एरा आरंभ होइथिला 78 AD रे. स्टार्टेड बाय कनिष्क. साका एरा स्टार्ट हैला कनिष्कଙ୍କ द्वारा. Which era is officially used by the government of India. ना वर्तमान हमर जो चलीछि सेटा साका एरा ही चलीछि जोटा कि कनिष्कଙ୍କ द्वारा आरंभ होइथिला. When did गुप्त एरा बिगिन. गुप्त एरा आरंभ होइथिला केबेठारु ना 319 रु 20 AD मध्यरे गुप्त एरा आरंभ होइथिला. What was the main occupation in the Paleolithic age. Paleolithic age रे hunting and gathering थिला बा hunting and food gathering थिला मुख्य occupation. In which age was the fire discovered. Paleolithic age रे fire discover हेथिला. Agriculture केबे बिगिन हैला. आरंभ हैला agriculture Neolithic age रे. Wheel केबे discover हैला से Neolithic age रे. फास्ट मेटाल जोटा कि मनीष यूज करूथिला सेटा हला कपर. प्रथम डोमेस्टिक एनिमल थिला डॉग. व्हाई इज मेहरगढ़ इन पाकिस्तान फेमस फॉर. ना अर्लीस्ट सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर रो अर्लीस्ट सेंटर होची मेहरगढ़ जोटा कि वर्तमान रो पाकिस्तान रे रहिछि. तो भीमबेटका कोन पई प्रसिद्ध ना रॉक पेंटिंग लागि प्रसिद्ध. Which Chinese traveler visited during Horses Reign. Horses Reign रे मन रखिबो मु कहिथिली H मन रखिदबो H for H बा हॉर्स कर रेन रे आसीथिले वेनसांग. ओके. सिटी ऑफ पाटलिपुत्र के बिल्ड करथिले ना उदयन. Which war led Ashoka to embrace Buddhism. कलिंग वार ऑब्वियसली जहा कि 261 BC रे हेतिला. When did Buddhism split into Hinayan and Mahayan. ना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रे. ओके. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रे हिनायन एवं महायन एभली दुई भाग रे विभक्त हेतिला. ओके. कोन बुद्धिज्म. वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड. प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी हेतिला ना राजगृह ठारे. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी हेतिला ना वैशाली रे. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी हेतिला ना पाटलिपुत्र रे. मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस. तो एही भली भाबरे सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस बा सोर्सेस जो रही छै हमर एंशिएंट इंडिया रो सेतरे लिटरेरी सोर्सेस रे आमे पढिले वर्तमान 100 क्वेश्चन कंप्लीट करिनेले. देन आमे माने चैप्टर 2 वर्ड को जिबा एवं देखिबा प्री हिस्ट्री कल्चर ऊपर किछि क्वेश्चन. ओके. हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया चैप्टर 2 प्री हिस्ट्री कल्चर्स ऊपर चलो किछि नजर दबा. कोन रहिछि क्वेश्चन. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री. रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को कहा जाय थाए फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोली. ओके. इनटू हाउ मेनी टाइप्स इज द स्टोन एज डिवाइडेड. स्टोन एज को मुख्यतः 3 भाग रे विभक्त करा गला. कोन कोन ना पालियोलिथिक मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्री हिस्ट्रिक पीरियड. प्री हिस्ट्रिक पीरियड आमे ताको कोन पई कहि थाउ. द पीरियड फॉर व्हिच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स और स्क्रिप्ट्स. जेहेतु प्री हिस्ट्री माने कोन पूर्व ऐतिहासिक युग बा प्राग ऐतिहासिक युग ताको कोन पई कहा गला. इतिहास युग रे इतिहास ताको आमे माने कोन पई कहूछे ना सेटार रिटन रेकॉर्ड रहिछि. किंतु तार जो पूर्ववर्ती समय रही बा प्राग ऐतिहासिक युग जितेबाला रही से रिटन रेकर्ड एगुड़ाक किसी ना कि स्क्रिप्ट किसी ना आम केवल किसी खोजिकी पाई एक्जामिनेशन रु पाई किसी तथ्य उपर आधार करके आम जानूचे जे हिस्ट्री पूर्वर किसी समय थिला जहां कि प्राग ऐतिहासिक युग बोलिका कहुला. व्हेयर इज द फर्स्ट स्टोन टूल फाउंड इन इंडिया. प्रथम स्टोन टूल कोठी मिलिथिला ना पल्लावरम रु जोटा कि तमिलनाडु रे अवस्थित. इन व्हिच एज डिड ह्यूमन्स डिस्कवर फायर. मनीष केबे निआर उद्भावन कला ना पालियोलिथिक एज रे किना.
In which age did humans start practicing agriculture? Na Neolithic age रे. In which age was the wheel invented? Wheel केबे इन्वेंट ହେଲା? Neolithic age रे. प्रथम डोमेस्टिक एनिमल किए थिला? ना डॉग. प्रथम मेटाल कोन थिला जहा कि मनुष्य मानक द्वारा व्यवहार हेतिला? ना कॉपर. What were the people of Paleolithic age called? तो Paleolithic age रो जो people थिले तांको क्वार्टरजाइट मैन बोलिका कुहा जाउथिला. What was the primary occupation of Paleolithic people? Hunting and gathering थिला जो एक क्वार्टरजाइट मैन मानकर occupation. Which place is famous for Paleolithic cave paintings in India? भिम्बेटका जोटा कि मध्य प्रदेश रे रहिछि. Who discovered the भिम्बेटका caves? तो ये भिम्बेटका केव को किए डिस्कवर कले? ना V.S. वाकनकर. ओके. Where were tools made of animal bones found? बिल्ला शर्गम केव जोटा कि कर्नल डिस्ट्रिक्ट रे रहिछि सेठु किना एनिमल बोन सबो मिलिथिला. ओके. Where did Paleolithic people live? न्याचुरल केव एवं रॉक सेल्टर रे साधारणतः पालियोलिथिक रो लोक माने रहुथिले. Where were tools made of animal bones found? एटा गला. Where did Paleolithic people live? आमे माने जानले जे न्याचुरल केव एवं रॉक सेल्टर रे रहुथिले. Why is हाथनारा जोटा कि मध्य प्रदेश रे रहिछि सेटा कोन पई फेमस? सेटा होछि गोटे मात्र साइट. इट इज द साइट वेयर ए ह्यूमन स्कुल फसिल वाज फाउंड. ओके. ह्यूमन स्कुल बा जो मनुष्यर जो खपुरी रहिछि तार फसिल बा तार अवशिष्टांश बा तार जो कंकाळटा देखिबा को मिलिछि. व्हाट कलर्स वेयर यूज्ड इन द मोस्ट एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स? ग्रीन एंड डार्क रेड. एंशिएंट रॉक पेंटिंग रे बा जो पत्थर रे चित्र हेउथिला सेथिरे किना मोस्टली ग्रीन एवं डार्क रेड कलर यूज होथिला. वेयर इज द ओल्डेस्ट ह्यूमन हैबिटेशन इन द वर्ल्ड लोकेटेड? ना सेटा कोट देखा जाय थाए अफ्रीका रे रहिछि जोटा कि ओल्डो भाई गॉर्ज रे किना देखा जाय थाए. व्हिच एज इज आल्सो नोन एज द सोहान कल्चर? अपर पालियोलिथिक एज को सोहान कल्चर बोली मध्य कुहा जाय थाए. व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक टूल्स इन पालियोलिथिक एज? ना क्वार्टरजाइट गोटे हार्ड रॉक होची क्वार्टरजाइट जहा को कि व्यवहार करा जाय थाए पालियोलिथिक एज रे विभिन्न प्रकार रो टूल तयारी करबा लागि. व्हाट इज द मेसोलिथिक आल्सो माने मेसोलिथिक एज को आउ मध्य कोन कुहा जाय थाए? ना माइक्रोलिथ एज मध्य कुहा जाय थाए. व्हाट आर द माइक्रोलिथ्स? माइक्रोलिथ हैला कोन ना टाइनी स्टोन टूल्स रनिंग फ्रॉम 1 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो गोटे मात्र पत्थर खंड थिबो सेथिरे विभिन्न कारुकार्य हेतिबो तो सेटा हैला माइक्रोलिथ. इन व्हिच एज डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन? मेसोलिथिक टाइम रे किना आरंभ होइतिला कोन ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन फाउंड? ना आदमगढ़ एमपी एवं बोगार राजस्थान रे किना आरंभ होइतिला. व्हिच इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया? बोगार होचे सबुठार गोटे बड़ कौन ना मेसोलिथिक साइट आम कोटार ना इंडिया रो. इन व्हिच एज डिड द यूज ऑफ द बो एंड आरो बिगिन? मेसोलिथिक टाइम रो आरंभ होइतिला. वेयर वेयर ह्यूमन स्केलेटन्स फास्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया? लंगंज ठारे जोटा कि गुजरात रे रहिछि तो सेठु प्रथम करिकि मनुष्यर जो स्केलेटन रहिछि डिस्कवर हेतिला. व्हाट इज सराई नहर राय फेमस फॉर? जोटा कि यूपी रे रहिछि सराई नहर राय सेटा फेमस अटे कोन पई? ना एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक वारफेयर. व्हाट वाज द मेन फूड सोर्स फॉर मेसोलिथिक पीपल? फिश एंड स्मॉल एनिमल्स. व्हेन डिड पॉटरी मेकिंग बिगिन? इन द लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक एज रे किना स्टार्ट हेतिला. मेसोलिथिक एज रो शेष आडो को पॉटरी तयारी होबा आरंभ हैला. देन देखिबा हमें माने प्रीहिस्टोरिक कल्चर रे देखुछे सेकंड पेज देखिबा तारो जे कोन रहिछि. हु फर्स्ट यूज द टर्म नियोलिथिक? जॉन लुबक प्रथम करिकि नियोलिथिक रो जो वर्ड रहिछि बा टर्म रहिछि सेटा स्टार्ट करिथिले बा यूज करिथिले. इन व्हिच एज डिड सेटल्ड लाइफ बिगिन? नियोलिथिक एज रे जेतु सेते बेले कोन नूतन करिकि बा नूतन प्रस्तर जुग रे किना आरंभ होई गला कोन ना एग्रीकल्चर से माने खेती करिबा स्टार्ट करथिले जेहेतु सेबेठु गोटे नुवा जीवन आरंभ होइतिला. Who called the Neolithic period a revolution? ना गॉर्डन चिल्डे Neolithic period को गोटे revolution बोलिका कहिसंती. Where was the earliest evidence of agriculture found in India? मेहरगढ़ बलूचिस्तान रे सेटा वर्तमान अवस्थित पाकिस्तान रे. What were the first crops grown in मेहरगढ़? तो मेहरगढ़ तो प्रथम एग्रीकल्चरल एविडेंस हमको तो मेहरगढ़ रे प्रथम करिकि को क्रॉप लगा जायतिला ना व्हीट एंड बार्ली रो सूचना मिली थाए.
Where was the earliest evidence of rice cultivation found? Rice cultivation कोठी प्रथम करिके हेतिला कोलदीवा उत्तर प्रदेश रे सेटा वर्तमान मध्य बलचिस्तान रे रहिछि. Where are Gofkal and Burjahom located? Gofkal and Burjahom रहिछि काश्मीर रे. Where were pit dwellings or underground houses found? से बुर्जाहोम रे रहिछि कोन ना pit dwelling जोटा को कि underground house कहा जाय थाए. At which site was the practice of burying dogs with their masters found? सेई बुर्जाहोम रे रहिछि जे जदि गोटे मालिक मरिगला ता सहित तार जदि कुकुर से पालिकी रखिथिला ताहले ताकू मध्ये ता सहित पोति दिया जाउथिला बा समाधि दिया जाउथिला. When did the practice of polishing stones बा polishing stone excess started? ओके polishing stone excess केबे स्टार्ट हेतिला ना Neolithic age रे. ठीक अछि. Which was the main Neolithic center in South India? बेलारी होउची Neolithic center South India रे गोटे main Neolithic center कोटा ना बेलारी. Where were ash mounds found? उंटूर रे जोटा कि तेलंगाना कुबगोल एवं कोठी ना पाला भयरे किना देखा जाय थाए आस माउंट गुडाक माने पाउंसर पर्वत देखा जाय थाए. ठीक अछि. इन व्हिच एज डिड वेविंग बिगिन? वेविंग से न्यूलिथिक एज रो स्टार्ट हैला. व्हाई इज चिरान जोटा कि बिहार रे रहिछ सेटा फेमस कोन पई ने एठी किना गोटे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मेड ऑफ बोन वेयर फाउंड देयर. टू व्हिच पीरियड डज मेहरगढ़ बिलोंग? मेहरगढ़ आसुची 7000 BC रू. Which was the first crop grown in South India? Horse gram बा उल्ला वालू जहाको सही एरिया रे बा साउथ इंडिया रे कहा जाय थाए. What is the age called where both copper and stone were used? सेटा को Chalcolithic age बोलिका कहा गला जोथरे बा जो एज रे किना कॉपर और स्टोन बोथ यूज हैला. What was the color of Neolithic pottery? Grey and black. Okay. What was discovered at Piklihal कर्नाटक रे? आस माउंट देखा जायछि. When did humans start to wearing clothes? Neolithic age रे. What does Chalcolithic mean? Chalcolithic means होची copper plus stone using period. Which was the first urbanization in India? Indus Valley civilization. Okay, Indus Valley civilization हैला first urbanization. To which state does the Ahar culture belong? ना राजस्थान रो. Where was the Jorwe culture located? Maharashtra रे. Where did the Kayatha बा कयथ कल्चर कायस्थ जोटा को कहा जाय थे सेटा फ्लोरिश हेतिला ना मध्य प्रदेश रे. व्हाई इज नाबदातोली फेमस फॉर? इट इज द लार्जेस्ट चाल्कोलिथिक विलेज साइट. ओके. व्हिच डेइटीज डिड चाल्कोलिथिक पीपल वर्शिप? मदर गॉडेस एवं बुल को पूजा करुथिले. ओके. In which age was the skill of smelting copper discovered? Chalcolithic period रे. What was the main crop of Chalcolithic people? Chalcolithic people मानंकर main crop थिला कोटा ना rice. What does megalith mean? Megalith means होची large stone. Microlith means होची small stone. Okay. In which region was the practice of placing large stones around graves common? सेटा थिला South India रे. Which metal is the megalith is associated with? ना Iran. When did the use of iron begin in India? Around 1000 BC रे iron रो व्यवहार आरंभ होइतिला. What are graves built with large stones called? तो ग्रेव जोटा कि गोटे पत्थर रे तयारी हेतिला सेटा को मेगालिथ बोलिका कहा जाय थाए. तो मेन्हिर कोन गोटे सिंगल स्टैंडिंग स्टोन प्लांटेड वर्चुअली. ताहले डॉलमेन माने कोन ना ए स्टोन टर्म resembling a table. Okay. Where were the oldest iron tools found? अंतराजी खेरा जोटा कि यूपी रे रहिছে सेठी किना ओल्डेस्ट आयरन टूल सब देखिबा को मिलता है. व्हाट वाज द मेन ऑक्युपेशन ड्यूरिंग द मेगालिथिक एज? कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर थिला मेगालिथिक एज रो ऑक्युपेशन. वेयर इज द बेलान वैली लोकेटेड? बेलान वैली रहिছে उत्तर प्रदेश रे. व्हाट इज द नर्मदा वैली फेमस फॉर? नर्मदा वैली रे रहिथिला ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ एंशिएंट फॉसिल्स. इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज कुबगल लोकेटेड? बेलारी कर्नाटक रे रहिছে. Okay, where are the Palavoy ash mound located? Anantapur, Andhra Pradesh रे रहिছে. Okay, to which ancient does the Maya culture belong? Maya culture असला अमेरिका रो. What is the name of the oldest human fossil? लूसी बोली ताको कहा जाय थाए. What does Homo sapiens means? Homo sapiens means हैला wise man. What is Australopithecus means? Southern ape बोलिका कहा जाय थाए. Australopithecus रो मीनिंग हैला करना Southern ape. Homo erectus रो मीनिंग कण ना upright man. Okay. Where did the Neanderthal man live? Germany रे रहुथिला. What are the drawings carved on rocks called? Rock रे जो carving होथिला drawing ता ताको कौन कहा जाउथिला ना petroglyphs बोली कहा जाउथिला.
व्हाट वाज द टेक्निक यूज टू मेक स्टोन टूल्स फ्लाकिंग बोली कहगला ताको व्हाट इज बोघाईखोर फेमस फॉर बोघाईखोर रे गोटे मेसोलिथिक हैबिटेशन साइट सेटा तेणु सेटा प्रसिद्ध व्हेयर इज द डम सादत कल्चर लोकेटेड ना बलचिस्तान रे देखा जाय थाए एभली कल्चर व्हाई इज रनागुंडाई फेमस फॉर फॉसिल्स एंड हॉर्स टीथ एथरे किना मिलिछि तेणु एटा प्रसिद्ध व्हाट आर पिग्मी टूल्स ना अनदर नेम ऑफ माइक्रोलिथ को पिग्मी टूल मध्य कहा जाय थाए इन व्हिच एज डिड ह्यूमंस मूव फ्रॉम ए नोमैडिक टू ए सेटल्ड लाइफ नियोलिथिक एज रे when was the potter's wheel invented neolithic age रे when did the iron begin in south india ना 1200 BC मध्य रे when did the prehistoric period end and the historic period begin after the invention of the script okay script जेतेबेले लेखा आरंभ होइगला सेतेबेले करना historic period आसी गला which culture is considered the foundation of the Indus Valley civilization neolithic culture of mehergarh okay तापर in which age did rock paintings reach its highest level mesolithic age रे what was the first weapon used by ancient humans stone ଆଉ hand axe जो रही दीटा weapon यूज होतिला where is the paleolithic site नेभासा located नेभासा रही महाराष्ट्र रे रही okay near which lake are mesolithic habitations found पुष्कर lake निकट रे किना okay what are items was found in पाटने महाराष्ट्र ostrich एक्सेल सेठी किना देखिबा को मिली थाए where were needless made bone found ना कुर्नूल केव रे who issued where were needless made of bone found ना कुर्नूल केव रे who issued the गिरनार inscription रुद्र दमन okay तापरे which metal was unknown to the Harappan people iron रो व्यवहार से माने जानि नथिले Harappan people माने who is the फाइनल स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन ना होमो सापियंस ओके तो एभली भाव में सांग मैंने आम मैंने डिस्कशन करने प्रीहिस्टोरिक कल्चर एवं सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री रे लिटरेरी सोर्सेस उपरे आई होप कि तुम मैंने निहाती भाव में बर्तमान आम 200 क्वेश्चन डिस्कशन कले नेक्स्ट क्लास रे आम किछि नुआ क्वेश्चन को डिस्कशन करबा ए 200 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रही बोधे याठू अधिक आउ ए दुईटा जाक टॉपिक उपरे किछि भी आसीबो नाही तो निहाती भाव में ए दुईटा जो टॉपिक रही आज क्लास टी मोस्ट इंपोर्टेंट रही तुमने निहाती भाव में ध्यान दब ठीक अच्छे तो ये जो क्लास टी पीडीएफ मु तुम मानू आमर टेलीग्राम चैनल जार लिंक आमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ऑलरेडी अच्छी तुमने जाइए सेठू आमर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करिपारिबो सेठू आमर ए पीडीएफ टी को डाउनलोड करिपारिबो ठीक अच्छे तेबे वर्तमान क्लास टी को एठी रखुची तो जिबा आगुरु आ गोटे कथा कहि रखिबी जदि तुम माने आमर ओटीईटी रो कोर्स को परचेस करबा को चाहुछ तेबे आमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार टोटल लिंक दिया जाइछि तुम माने जाय कि क्लास कोर्स संपर्क रे जानि परिबो कोन कोन रहिछि एवं दिया जाइथिबा नंबर रे तुम माने कांटेक्ट करिके परचेस करि परिबो आई होप कि आज क्लास टी तुम मानक लागि निहाते भाव रे हेल्पफुल रहइबो तो वर्तमान क्लास टी को एठी रखुछि थैंक यू।